Hello, guys. Hello, guys. Can you hear me? Ah, yeah. Okay, guys. I'm just setting this up. So, okay. I hope I'm like. I hope my voice is like. Okay. So let's just. Okay, guys. Wait a minute. Wait a minute. Just give me some time. Just give me some time, guys. I'll I'll be start I'll be starting to play. And yeah, guys, I'm back. Like pin message and yes, and yes. Basically, it's done. Guys, chalo, let's begin. पता नहीं कहाँ तक हुआ था शायद पता नहीं. हाँ, आपने को वो सब Complete ढूंढना the था ना. tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defender, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Okay. इससे बात करते Pardon चलो. me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the pressure when I was told. It's silly. Very well. If I have time, ये I shall डायलॉग see हो where they गया था lead. इसलिए मैंने Oh, स्किप how किया. kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around. Folks still talk about Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Find the Forbidden Forest. So let's just. अरे ये जो बता रहा है उधर से ही जाएगा. नहीं वो तो उसका बता रहा ना. चलो कोई ना. ऐसा टैब दबा के 3 दबाए तो हाँ. क्रेजी. क्रेजी है गाइस. ये तो बहुत ही मस्त है. दिस There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. बटरफ्लाइज किधर जा रहे हैं? उधर जा रहे. चलो
फाइंड आउट वेयर द बटरफ्लाइज आर गोइंग। हाँ उधर ही जा रहे हैं अपन। Well, well. Look what we have here. क्या मिला? रिटर्न टू मिस। ओके सो टैब एंड 3। यस चलो ऊपर जाने तो पहले, फिर शिफ्ट दबाओ एंड यो। शायद यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हाँ वही लगा था मुझे। तो यही नज़दीक पड़ेगा ना, मतलब हाँ यही नज़दीक पड़ेगा शायद। चलो इधर उतर जाते हैं। चल भाग बेटे बेटे। पकड़ना इधर। हाँ चल। हाँ चढ़ गया। थोड़ा बस क्रेजी। Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Yes. Hello, we Miss have an Willardsey. answer. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. चलो ये भी क्वेस्ट कंप्लीट। टैलेंट पॉइंट मिला, टैलेंट पॉइंट। तो चलो टैलेंट पॉइंट का कुछ करते हैं। आई गेस रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में एंड्योरेंस ये अपन इससे क्या होता है? लास्ट लॉन्गर। ओके फॉर ईच चाइनीज सॉन्ग थ्रो ये ले क्या? आई गेस नहीं, दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट वाले हैं, जैसे कि ये नया स्किल सेट, मतलब विगल वेल्ड हील्स यू विद अ ग्रेटर इफेक्ट। हाँ अरे हाँ ये करना है। चलो बाकी दूसरे क्वेस्ट क्या है? अरे शॉप्स acquire and use an invisibility potion, acquire and use thunder brew potions against enemies, defend you। ओके एंड कोगावा का असाइनमेंट क्या है? अच्छा अरेस्टो मोमेंटम। अच्छा acquire a venomous tentacula, acquire and use a mandray on multiple enemies। हाँ कर सकते हैं। अरे लेकिन वेनेमस टेंटाकुला कहाँ मिलेगा? वेनेमस टेंटाकुला ये हॉक्समीड में नहीं है ना कहीं भी जो बेचने वाला? शायद नहीं है, देखिए। इसके पास अपन गए थे शायद, इसके पास अपन गए थे लेकिन मिला नहीं था शायद। देखते हैं फिर से।
फिर से देखते हैं जाके कि क्या है। Greetings. Please take your time looking about. देखो ये फ्लक्स मैलो स्वीट और ये सब वही बेचता है भाई, ये नहीं बेचता। No one can say I don't keep a stacked shelf. शायद अपने को वो स्कूल में मिलेगा। हाँ मतलब हॉगवर्ट्स में मिलेगा। स्कूल स्कूल मतलब वो स्कूल ही है मतलब। लाइब्रेरी, ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउसेस में कैबेज तो मिला था अपने को, बट देखते हैं अगर वो मिलेगा का नहीं। वेनमस टेंटैकुला एंड बाकी का जो था उधर। चलो शायद यही है ना वेनमस टेंटैकुला। कैबेज और वो सब कहाँ है मतलब, याद है क्या गाइस आपको? हाँ इधर, इधर नहीं है। इसके ऊपर क्या है? चलो ये तो बाहर समझो, ये बाहर का है। नहीं मतलब ये ऊपर से कलेक्ट करने का है। ठीक है आई गेस ये साइड है। हाँ यही साइड है। अरे ये है क्या जो ले सकते? नहीं ये नहीं। हाँ ये है ना वेनमस टेंटैकुला और मैंड्रेक। मैंड्रेक मैंड्रेक कहाँ है भाई? आई गेस मैंड्रेक ऊपर वाले नहीं, तो ये साइड वाले। अच्छा इस साइड क्या है? इस साइड वेनमस टेंटैकुला है, तो इस साइड मैंड्रेक होना चाहिए। नहीं है मैंड्रेक। वेनमस टेंटैकुला तो मिल गया, मैंड्रेक इधर से ही लिया था ना वेनमस टेंटैकुला। हाँ मैंड्रेक किधर है? यार क्या ही बकचोदी है भाई। देखो ये अच्छा इधर इधर से चल के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए इधर। नहीं इधर इधर भी रास्ता है। फार भाई फार। क्या है इसमें? कुछ तो है, मुझे नहीं पता था इधर है। ये बी मतलब क्या? गाइस हेल्प मी फाइंड अ मैंड्रेक। I did tell you. Must I tell you, we do not support Puddlemere United. If I find one more of their mementos on your wall, you'll be on the first train home to take it down. क्या है भाई वो? क्रेज था भाई। अरे अपने को टीचर जहाँ सिखाई थी ना, यही है टीचर, तो मैंड्रेक भी यही होना चाहिए ना। मैंड्रेक क्यों नहीं है?
मैडम मैडम आई वांट सम मैंड्रेक मैडम। ये सब कुछ पढ़ा रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं तो मैंड्रेक होना चाहिए ना। देखना पड़ेगा गाइस मैंड्रिक कैसे मिलता है। यहाँ पे तो नहीं मिला अपने को, शायद ऊपर बालकनी में होगा क्या। लेट मी जस्ट सी। ये बालकनी नहीं, ये बालकनी में भी नहीं, यहाँ पे में भी। चेक करें। Nothing useful guys here. नहीं नहीं यार, नहीं मिल रहा। और ये यहाँ से जंप भी नहीं करता। क्यों नहीं है मैंड्रेक? मैंड्रेक का मैंडेटरी नहीं है क्या? यहाँ पे लिटरली मैंड्रेक लगा सकते थे ये लोग, बट नहीं। वेनमस टेंटाकुला तो इजी है, एक्वायर एंड यूज करना है ना। हाँ बाद में करेंगे, बट मैंड्रेक लेट मी जस्ट गूगल गाइस, गूगल करने दो प्लीज, थैंक यू। डॉग बीड एंड डेथ कैप शॉप बोल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है भाई? मैंड्रेक का सीड है बोल रहे हैं। एक मिनट, गूगल में तो ऑक्समीड, नॉर्थ ऑक्समीड में है बोला उसने, गूगल में मतलब। हनी ड्यूक्स है, स्टीफी एंड सन्स है, ऑक्समीड स्क्वायर है, ब्रूमैन पैक यहाँ होगा क्या? हाँ यहाँ है वो। शिट भाई, यहाँ टीपी मारनी होगी, फिर सीट ले लेंगे और अपना रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाके वहाँ पे एक टेबल लगा के मैंड्रेक उगा देंगे। मैंड्रेक इजी, अपने पास 800 होने चाहिए, और आई गेस 800 है अपने पास। चलो देखते हैं। यहाँ से जाने का। यहाँ पे हाँ ये यहाँ है। चलो फ्लेम, हाँ बस यही करना था मुझे। चलो 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 चलो, यहाँ पे पेज है, कहाँ गया? आजा आजा, ऊपर आजा, ऊपर आजा।
फिर मैंड्रेक उड़ने का करना पड़ेगा कुछ. Come on inside. Oh, watch yourself though. Let's have you leave. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Such a wee bairn gieing a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. 800 रुपए नहीं है क्या अपने पास? कुछ बेच सकते हैं क्या इसमें? मतलब थोड़ा ही बेचना है तो इसको बेच सकते हैं. But your things will be safe with me till they're sold. Then you'll have to make do. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. चलो मैंड्रेक मिल गया एंड मैंड्रेक सीड्स मिला ना. मैंड्रेक सीड्स मिला. चलो अपने हॉगवर्ट्स में जाके रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाके वहाँ पे उगा लेंगे नया. तो चलो. Thinks you should be proud of all the potions you brewed. पोशंस नहीं भाई. इसको एम्प्टी करके रिटर्न ही नहीं. मैंड्रेक लगाना है और उसको 10 मिनट लगेंगे. राइट. अभी पोशंस में क्या क्या. इनविजिबिलिटी पोशन. 1 मिनट उसका जाके देखते हैं पहले और क्या क्या है. क्वेस्ट में जाके ये कौन का बाद में कर. इसका थंडर ब्रू ना. थंडर ब्रू क्वेस्ट में. थंडर ब्रू. ओके फोकस. ये थंडर ब्रू. अच्छा ये तीनों है जो अपने पास नहीं है. अरे क्या बना रहे. आई डोंट नो. चलो I guess this is the time for later and ये मैंड्रे को टाइम लगेगा उसको. So ये क्या है? I don't have anything for this at the moment. एंड बाकी का आई गेस बाकी की क्वेस्ट क्या है. मतलब डैंडिलियन की तो अपने को मतलब वो उसको टाइम लगेगा. ये तो मिल रहा नहीं. और हाँ चलो इसका कर लेते हैं भाई. इसका कर लेते हैं. प्रैक्टिस फ्लाइंग नियर स्पायर्स एंड प्रैक्टिस फ्लाइंग नियर केन ब्रिज. ओके चलो. वो मैडम ने कहाँ प्रैक्टिस को बोला है. उसका ही हम कर रहे हैं ना. अच्छा वो साइड है. ठीक है चलो. फिर tab 3 and shift.
इतना दूर हो गया क्या? ये क्वीन ब्रिज मतलब यही है क्या? पहले जिसका मतलब मीटर्स बता रहा उधर जाएंगे फिर क्वीन ब्रिज जाएंगे। चलो ये फोड़े तो क्या मिलता है अपने को? अच्छा ऐसे ही। There we go. 1000 मीटर गाइस, किलोमीटर। I hope it's in meters, not like feet or anything like that. ये नीचे नीचे क्यों मतलब Concentrate. समझ नहीं आ रहा वो नीचे क्यों जा रहा? देखो फिर से चलो 500 मीटर। अरे नॉट अगर ये फ्लाइंग का नहीं होता ना तो अपने को पता नहीं कितना टाइम लगता है इधर जाने में। हाँ चलो यही होगा, यही होगा। चलो चलो, हाँ यही है। चलो That's it. कितना दूर है भाई? Not a bother. एक काम करते हैं ना, इधर से टीपी मार। ओ वाह, क्रेजी क्रेजी भाई, क्रेजी। अपन मतलब ब्रूम के ऊपर से या हाँ नीचे नीचे से। Welcome back. मैडम Have you finished your assignment? Reporting back, Professor. Yes. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. स्पेस F और हाँ माउस बटन्स। ओके, स्पेस स्पेस F चलो। Very good. I recommend practicing your new spell as much. ये है ना रेस्टोर मोमेंटम। Perhaps before you leave here. Arresto momentum. That's it. Keep it up.
Well done. You are on your way to mastering Arresto Momentum. चलो अरेस्टो मोमेंटम तो आ गया। अभी चलो अभी ये दोनों का बचा है ना। हाँ, इनविंसिबिलिटी पोशन और थंडर प्रो अपने को उधर से लेना पड़ेगा क्योंकि अपने पास पैसे नहीं है। अरे बहुत सारे लेटर है अब तो। गेयर्स में आउटफिट में अच्छा चलो ये बेच के आएंगे। बाकी का अपने पास 14 रुपए। एंड अरे ये हैंडल्स नहीं बेचते क्या? हैंडल्स नहीं बेच सकते क्या? ये एफ से क्या होता है? अच्छा अरे क्रेजी, अरे पहले नहीं पता था चला। हाँ इधर से जाके नहीं, इधर से एफ दबा के। हाँ ये रखते हैं ना। हाँ हाँ ये बढ़िया लग रहा है। या फिर ये एंड दिस परहैप्स नो दिस लाइक या हाँ दिस इज लाइक वेरी गुड भाई। चलो इसका चेंज अपीयरेंस फिर क्रेजी है हाँ क्रेजी। पहले कैसा था? गोल्ड रिम्स। चलो ये रखते हैं भाई, दैट इज लाइक वेरी कूल। हाँ इसका भी चेंज अपीयरेंस करते हैं। भाई पहले क्यों नहीं पता चला? ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं। हाँ अपीयरेंस, हाँ क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी। और ये इसका शॉल आई गेस, लाइक शॉल आई गेस शॉल आई गेस रहने देते हैं। नहीं नहीं रखते हैं। रेड इज लाइक वेरी गुड। रेड इज लाइक वेरी गुड भाई। एंड इसका हो गया। देन दिस रोप इज लाइक भाई अपन ये सब भी पहन सकते हैं। ओ गाइस क्रेजी। हाँ ओ भाई दिस इज लाइक, ओ भाई दिस इज लाइक वेरी गुड। Authentic historian's uniform, legendary cape. Okay, this is Merlin's spider slayers, charms professor. Yeah, let's do this starry build भाई। Crazy, it's going with our specs like and about this भाई पहले क्यों नहीं पता चला? Yeah, this complementing this I guess, or else this no rope, let's go no. Yes. About outfit, so yeah we can go this one, or else no not this. Wait a minute, let me just fix this. Yeah, now we can like this one, this, not this one, not this, not this, not this.
This is like decent, very decent. Okay. Yeah, let's go with this. And this rope, I guess invisible ही रखते हैं. रोब I guess invisible ही रखते हैं. चलो nice. ओके अब भी पता चला भाई. क्रेजी. हाँ अपीयरेंसेस का क्रेजी. मतलब अपने पास चलो देखते हैं कौन सा गेयर्स है उस हिसाब से. अरे यहाँ पे और अनलॉक होंगे क्या? आई गेस नहीं. और क्या है? अच्छा ये ओके. मतलब अपने पास और भी आ जाएंगे क्या अभी? कलेक्शंस में आएंगे. हाँ वही. कूल भाई कूल. अरे गेयर देखना तो भूल गए भाई अपन. गेयर में और क्या क्या है जो अपन बेच सकते हैं? ये तो नहीं बेच सकते. फिर क्रेजी. अपने वो वाला पहना है लेकिन इसका बाकी ये वाला बेच सकते हैं ना. हाँ वो वाला बेच सकते हैं. चलो बाकी शिट गाइस. बाकी ये तो नहीं बेच सकते क्योंकि वो लेजेंडरी है. फिर हाँ ये वाला यूनिफॉर्म बेच सकते हैं. और इधर इसमें तो है ही नहीं. फिर इसमें नहीं लेजेंडरी है. छोड़ो. एंड ब्रूम फ्लाइंग माउंट्स. ओके वो सब नहीं है अभी. एंड हाँ चलो जाके बेचते हैं पहले. गाइस पैसों की बहुत कमी है भाई इसमें. पोशंस ना, पोशंस में जाके देखना पड़ेगा. शायद फ्री में दे दे. इसलिए वो सब आ रहा था. थोड़ा रिवॉर्ड ले लो, थोड़ा रिवॉर्ड ले लो. हाँ ले लेना चाहिए था. अरे यही तो है पोशंस वाला. For delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. चलो 134 हो गए. I hope to see you again. Farewell for now. 134 से क्या होगा? आई डोंट नो. अरे 100 रुपए का ही है. अरे नहीं यार 500 रुपए भाई. इनविजिबिलिटी एंड्योरेंस. अच्छा यही Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. यही ले लेंगे भाई दूसरी बार से. मतलब यही मतलब ये रेसिपीज. बाकी का अपन तो I hope to see you again. Farewell for now.
अभी लग रहा है ना आपका कैरेक्टर सेक्सी। रूम ऑफ रिक्वायरमेंट देखते हैं। आई गेस 10 मिनट तो हो गए। हाँ 1 मिनट होने को आए तो उसका बाद में कर लेंगे। पहले पहले ये लेके ट्रायल में जाएंगे और मेक श्योर करेंगे मैंड्रेक और वो सब यूज़ करना एंड देन वी कैन लाइक यस देन वी कैन लाइक हाँ कर सकते हैं वैसा। चलो ऐड बाकी 30 सेकेंड्स 35 तक। गैस मैं आपको मतलब बता देता हूँ। फर्स्ट में ना ये गार्लिक का असाइनमेंट कर लेंगे ये रकम के ट्रायल में और ये दोनों हो जाएगा साथ में। फिर शाप का बचेगा, जब पैसे आएंगे तब ये दोनों के ले लेंगे एंड लाइक हाँ बाकी का ये दोनों आई गेस वो बाद में ये करना पड़ेगा। हाँ वो दोनों ये मैंड्रेक कलेक्ट करके अपन जाएंगे उधर। तो चलो इसके पास और I'd नहीं like है to क्या? ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. देखते हैं क्या होता है अभी। हाँ। चलो ये भी अच्छा है एंड आई गेस मैंड्रेक इज नाउ रेडी। मैंड्रेक इज नाउ रेडी एंड दूसरा हो गया। चलो नहीं डायरेक्ट टीपी मारते हैं ना, मार सकते हैं वहाँ तक। तो चलो यहाँ तक तो टीपी मार सकते हैं, इधर से उधर तक उड़ के जाएंगे। भाई कैसे कैसे आवाज आ रही है उसमें से? एक मिनट टाइम करते हैं। 1 2 3 4 सेकेंड्स में 50 मीटर हो रहा है। ठीक है 1 2 3 मतलब इसमें 3 सेकेंड्स में हो रहा है बूस्ट में। Intriguing place, Sanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. क्या बकबक कर रही भाई? चलो वेट करते इधर। Over here. चलो बताओ भाई। We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower.
More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. One of the best meals I've ever eaten. Arresto momentum, glaciers, levioso, confringo, expelliarmus. यहाँ पे Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. अभी Ramrock said so. Ramrock said so. Oh, could do with a nice stew about now. There must be something here. Ramrock said so. इसको लिपटाते हैं पहले Petrificus Totalis. Feels like I've been at this for hours. और बाकी के दो बचे ना Petrificus Totalis. और क्या इन्वेस्टिगेट करना है इसमें से Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. Come here, you. Confringo! See that? We've tried that before. Showing off, are we? Incendio! I've been fighting since before you were born. यही मौका है ये सब यूज करने का Is that the best you can do? Confringo? Easily diverted. I shall avenge your death. You're so very weak.
और वेनमस वो यूज करना है ये Confringo. क्रेजी सर्च द टावर चलो Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. उतने बड़े बैग में से 39 कॉइंस वाओ कहीं भी हालते चालते कहीं भी Welcome to San Bakar's Tower. Huh? Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. ये बाद में ये क्रेजी है guys, कुछ नहीं बोलो ये एंशिएंट मैजिक वाला क्रेज यहाँ पे कैबेज रख देते गाइस कैबेज बाकी इधर कुछ भी नहीं है ना लेने का चलो फर्स्ट ट्रायल अपन एंटर कर चुके हैं गाइस लेट्स गो अरे एक मिनट गाइस ये ऐसा क्यों आ रहा है I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. क्या होगा गाइस तोड़ने पे कुछ मिलता है क्या
यहाँ से भी कुछ नहीं है. Impressive. That must have done something. Best have a look around. वाह, ये दरवाजा खोल दिया. चलो. These chests are very important. Most important part of the game, huh? Fancy stairs, यार. Complete the perseverer raccoon style. क्या है ट्रायल में? अरे गाइस नहीं जाना था More उधर. traces of ancient magic. Something must be different. Thank God भाई. वाह, एरी म्यूजिक बज रहा है गाइस इधर कान में. This game is very beautiful भाई. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Potato! Stupefy! Stupefy! Incendio! Stupefy! बहुत जल्दी ही मार दे रहे हैं एनिमीज को. What have the keepers planned for me? इधर कुछ है क्या? इधर ही जाना है. ठीक है. These look familiar. नीचे कुछ है क्या? नीचे I guess there's nothing. हाँ उधर चेस्ट है. नहीं चेस्ट नहीं. चलो. Was it Accio I used before? Accio ही यूज किया है ना भाई तूने. एंड जा सकते क्या इधर से? इधर इधर तो ले लेंगे फिर. इधर इसके नीचे कुछ भी नहीं है. उधर तक कैसे जाए? That platform looks like it ought to get me where I need to go. छोड़ो, चलते उधर.
What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Confringo! More statues. Protego! Incendio! Not making this easy on me. चलो बाकी नीचे इधर कुछ भी नहीं है तो क्यों बनाया? I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio! यहाँ होगा obviously. इधर से उधर उधर से इधर ही हो रहे हैं अपन अगर ये नहीं हो सकता तो कैसे जाना उधर? उधर जाना है अपने को। इधर से नीचे से जा सकते हैं। Seems I ought to explore this archway from both sides. इससे नहीं। What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. हुआ ना different. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. दूर करने का था ना कुछ ये ना हाँ नहीं शायद यहाँ से नीचे जाना है क्या
नहीं जा रहा है ये. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. अभी इधर से गए तो यहाँ ये होना चाहिए. हाँ मेका लागे. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. Oh भाई crazy. मुंह में गोट्टे आ गए गोट्टे. चलो फाइनली गाइस हो गया. मतलब हो गया इतना ही. इधर जाना है ना. और उस तरफ मुंह हो कि क्या मिलेगा. अरे उधर नहीं उधर नहीं. Now to see what's changed on each side of this archway. हाँ वही तो. उस आर्चवे तक कैसे. यही तो था. बस.
side of the archway. But how? चलो मिल गया. अभी उधर जाने के लिए रास्ता नहीं है. वाह. What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. यार अभी तक नहीं खुला वो. क्या हो गया उसका? What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. Another platform भी तो होना चाहिए ना. Accio. What if I stood on one platform and used Accio on the other? That ought to work. Accio! I don't know ये इधर क्या कर रहा है. Reparo. Accio. हल्लुक जाए तो भाई. ये भी ठीक है. फिर यहाँ से ये एक्टिव किए. ठीक है. फिर इधर से अपन कूद गए. ठीक है. फिर ये चेस्ट तो लिया नहीं. फिर इधर जाके अरे
मतलब वो नहीं आएगा। अरे कैसे जाए अभी उधर? चलना यार, नहीं क्या? हाँ, खड़ा हो सकते हैं ना इसमें। लेकिन बाद में इधर लेज ग्रैब नहीं हो रहा। हाँ, वो दिक्कत है। ऐसा थोड़ा रख के समझ आया भाई। इधर से ऐसे जंप करना है, फिर इधर से ये इतना इतना तो इतने को इतना टाइम दिया तो कैसा राहुल? नहीं चलेगा। वाह, लगता है इधर बॉस फाइट है भाई। Don't like the look of this. गिर गए भाई उसको भाई। क्रेजी या क्रेजी। चलो
सारे यूज हो गए. What a relief. What a relief. अच्छा ट्रायल हो गया. नाइस 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 नाइस. Another pensive. क्या है इधर? क्या छुपा कर रखा है इधर? क्या छुपा के रखा है इधर? चेस्ट यही तो चाहिए भाई सबको. और कुछ भी नहीं है. लेट्स गो. दबा के रखना है. हाँ रो रहा. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago,
but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. वाह, ये बड़ी हो गई, मतलब टीचर बन गई स्टूडेंट से. चलो अपन आ गए वापस. Another memory. Now to find a way out of here. इधर का चेस्ट ले लिया. कब और कैसे है? More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Map chamber, चलो. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context.
For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Wow. Thank you, sir. I will look out for them. Assignment's all finished. Attend the herbology class during the day. Yes. I should ask Sirona at the Three Broom... Spectacular news! The broom upgrade's ready. Ha! Stop by the shop when you can. Okay. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Another house token for the house chest. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. पहले हम हर्बोलॉजी क्लास जाएंगे. I don't know किधर गया वो. काफी चलो हर्बोलॉजी क्लास. वाह. How wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Yes. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort.
चलो चलो F हाँ FVQE Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. नेक्स्ट रूम बोला अपने लिए नहीं Levioso! Wingardium Leviosa! V से पास आता है F से दूर होता है और U से समझ गया हो गया क्या Wingardium Leviosa! वाह Wingardium Leviosa! और बाकी कुछ नहीं क्या Accio! Wingardium Leviosa! Levioso! Wingardium Leviosa! चलो सीख लिए थोड़ा बहुत और क्या क्या है गाइस मेन क्वेस्ट तो बहुत हो गए अभी तो बीस्ट के क्लास में जाना है ओए का असाइनमेंट क्या है कलेक्ट ट्रोल बोगीज हाँ कैस्ट डिपल्सो ऑन लेविटेटेड एनिमी स्वीपिंग कंपटीशन चलो यहाँ पे जाते हैं चलो अपन उधर से गेट भेज भी सकते हैं फिर चाहिए तो पहन भी सकते हैं you up to now? सब जानना है इसका Done. Welcome back.
I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. I'm afraid that costs a bit more than you have. Thanks for stopping by. Hope to see you again. रुको पहले देख लेते हैं क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं अपन गेम में, क्या क्या पहन सकते हैं, उसके हिसाब से अपन बेच देंगे बाकी का। हेडवेयर ये 34 है इसका कितना है 28, इसको बेच सकते हैं ना। हाँ चलो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट, अरे नहीं इसको बेच देते हैं क्योंकि इसको बेच देते हैं क्योंकि अपने पास ये है अभी। और बाकी का इसको ये ग्रीन वाला वर्डेंट हैट बेच देना है, ठीक है। और नेकवेयर में भी नया आया है कुछ। अरे पहले जाके उधर ही चलते हैं भाई। फिर यहाँ फिर से टीपी हो जाएगा ना। पे जाना था, चलो वही था क्या एक? हाँ ये लॉक क्यों है? बहुत मतलब बहुत ही ये लॉक्ड क्यों है भाई? ये लॉक्ड क्यों है? चलो अभी फिर से ये आया ना नया। ये बढ़िया है। बाकी का चलो। Dick thinks you should be proud of all the posters. और बाकी का
इसका ये भाई बहुत महंगा दे रहा भाई You're back. Nice to see you again. ब्रूम अपग्रेड्स यार काफी महंगा है Jasper Trout may not keep a tidy tavern, but he'll carry your secrets to the grave. Thanks for stopping by. Hope to see. हमने पहने नहीं क्या अरे क्वेस्ट में क्यों जा रहा हूँ मैं अरे मैप में भी क्यों जा रहा हूँ गियर में जाना है हाँ अरे हाँ ये भी बदलना था नहीं ये नहीं बदलना था क्योंकि इस पे डिफिंडो है 29 और 28 में ज़्यादा फर्क नहीं है एंड स्कार्फ इज लाइक एंड रोब में जो पहना से हुआ यही करेक्ट है एंड बाकी आउटफिट तो ऐसे ही अपना ये भी बेच दे क्या Thanks for stopping by. Hope to see you again. नहीं ना नहीं बेचना वो बाकी बाकी इसके पास 600 Thanks for stopping by. Hope to see you again. 672 में क्या होगा यार वही तो नहीं होगा ना पिपिन्स के पास चलते हैं चलो जे पिपिन्स नहीं यहाँ पे नहीं है वो अरे ये तो एंट्रेंस है एंट्रेंस से घुसे तो इधर गए तो पता नहीं Where is Pippins? Here is Pippins. Let's go there. Again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. अपने को भाई अभी तो रेसिपी तो नहीं अभी सोचो गाइस इनविजिबिलिटी का 500 रुपये है ठीक है और 800 रुपये में नया ले सकते हैं फिर थंडर ब्रू 1000 रुपये का है थंडर ब्रू इधर 1200 में मतलब 200 300 इसमें 300 और उसमें 200 ज़्यादा है तो वही करेंगे ना आप समझ रहे हो Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. I hope to see you again. Back jinx, flipendo. Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse.
यार अभी तो बहुत सारे क्वेस्ट और वो सब खुल गए भाई एक ही टाइम में। Grow and harvest flux weeds. Acquire all three combat plants and use them simultaneously. Okay. Acquire and invisibility और thunderbolt दूर है बहुत, ये पता नहीं। स्वीपिंग द कंपटीशन भी नहीं होगा ना स्ट्रीम। बाकी का नहीं है क्या? पैसे ही नहीं है गाइस, पैसे कमाने का कैसे? Does have charm, I didn't know that. अरे फ्लक्सवीड सीड लेना है भाई, चलो फ्लक्सवीड सीड लेना है। पता नहीं वो कितने का होगा। उफ हाँ भाई, आपको पढ़ाई करना तो बहुत ही महंगा है, अब पता चल रहा है भाई। ये लोग तो Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. ये है क्या फ्लक्सवेड? Now, you let me know if there's anything else I can help you with. चलो अपना रूम में चलते हैं। अपने क्लासरूम में फ्लक्सवीड सीड उगाने हैं। चल, जिसका डोर ओपन रहता है वही अपने क्लासरूम में। इंस्पेक्ट और प्लॉट एम्प्टी करना है, फिर मैंड्रेक और ये फ्लक्सवीड है ना, इनकरेक्ट पॉट साइज। अच्छा, इनकरेक्ट बोला ना ये क्या है? ग्लेशियर्स और हाँ ये कॉन्जूरिंग आल्टरिंग स्पेल। चलो भाई तुम मैंड्रेक होगा भाई, तुम मैंड्रेक। बड़ा पॉट, अरे मैडम बड़ा पॉट चाहिए मैडम। मैडम बड़ा पॉट चाहिए। चलो शायद वो अपने रूम में ही मिलेगा भाई, ये तो देने नहीं वाले। बाकी का इधर से नहीं, इधर चलते हैं और नहीं, इधर नहीं, ऑपोजिट क्लास में।
इसका ऑपोजिट हूँ मैं। ऑपोजिट हूँ मतलब ये नहीं, इसके बाजू वाला। बाकी ये उगता नहीं क्या अभी? चलो चलते हैं उधर अपने सीक्रेट रूम में, वहाँ पे उगाते हैं वो। हाँ, इसको 2 मिनट है अभी, इसको 2 मिनट है ना। स्मॉल प्लांटर है ये, तो अपने को बड़ा प्लांट लेना है। तो चलो कॉन्जुरेशन चालू करते हैं। हेर्बोलॉजी, ये सारे स्मॉल है ना, मीडियम लार्ज पॉट नहीं तो गार्लिक है ना। हाँ, ग्रो एंड हार्वेस्ट फ्लक्स वीड देखना पड़ेगा, पहले गूगल करता हूँ मैं। Seeds from the magic knee, 350. Table spellcraft from tomes and scrolls. मतलब गए बेटा, उसको बहुत सारे पैसे चाहिए असाइनमेंट करने के लिए, तो छोड़ो असाइनमेंट, जाए कांड बनाने। चलो, और नहीं तो क्या। हाँ, इन दोनों से बात कर सकते हैं। चलो चलो चलो, बीस्ट क्लास में जाएंगे आज, मिस्टर बीस्ट की क्लास में। वो चाबी किधर गई रे? अरे ये तो इसका क्लास है भाई। उधर कैसे जाएंगे? अच्छा, इधर से चलो। Awful when they ask you a question now, isn't it? Robbing is a
devices. Simple. दिन का वेट करना पड़ेगा अभी. इधर क्या होगा? Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy. Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. क्या करना है? You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Tap T and then I like to think it hover over enriches B. his experience. Setting moves. Drag it and drag it to use. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. Yes. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. चलो. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Yes. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald.
The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? I enjoyed it. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Yes. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okay. Psst. Over here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have Dhoni to. ladki. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Wow. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Wow. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Wow. Okay. Banegi kya? Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. वाह वो सीटी कैसे बजाते हैं मेरे को नहीं आता वाह रे ओ भाई पीछे घोड़े का वो आगे वो हॉल का Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? यस भाई Go on, crazy introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. ओके ओके अच्छा खुद ही करेगा मतलब अपने को कुछ नहीं करना वाह I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle.
You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. एक ही साथ में दो खाती है, वाह। Wonderful, bhai. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? Wow. I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. इसकी माँ का फर्स्ट में क्या था? 1 में ये था ना एक्सपीरियंस। Hey, Poppin! Hey, Poppin! चलो नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास इज दिस, सो लेट्स गो। बाकी तो अपन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत दूर है यार इसका क्लास। एस्ट्रोनॉमी क्लास है क्या? Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful.
I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. चलो रात हो गई। Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, Hello guys, I after know this two quest, statues right here in the faculty log tower. off. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. FF right click, okay. Space, F, right click, left click, space again. एक मिनट इधर हेलो हो रहा किधर है? अच्छा मतलब वो नाइस वो उसके साथ ही Alohomora. वाह अभी use QEAD to move sparks and rotate the dials until both corresponding gears are activated to release the lock. Okay.
50. पता नहीं क्या कर रहा हूँ लेकिन कर तो रहा हूँ कुछ तो कर रहा हूँ क्या करना है यार यार Yes. आ गया guys, आ गया. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Cast Revelio reveals authority figures, enemy locations, clothing. Revelio. जाओ उधर देखते हाँ Revelio. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of... This must be the prefect's bathroom.
चलो खुल गया नाइस They're saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Rude. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and Hippot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, something will hatch. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My mark from Professor Hecat's class is superb. I don't think that's what that class is for. He's right. Why don't you leave goblins alone? I'm a prefect too. That's it. 50 house points. You know you can't do that. This has the nerve of some students thinking they can simply go anywhere uninvited. Sit bhai. Try again, let's try again. दिखा नहीं यार वो उधर कैसे आया चलो चलते हैं चलो 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 Revenue. I will. You are the once. Try again भाई try again अपने को ऊपर चढ़ना है अभी यार fuck भाई मुझे पता नहीं था कि उधर का हो गया मुझे लगा फिर से करना पड़ेगा Expelliarmus! Careful! Things will soon go to pot if I'm put out of commission.
चलो जल्दी जल्दी चलते हैं अभी ये टाइम। Revelio. उसको कैसे भाई उसको कैसे वो उधर ही खड़ा है। अरे नशेड़ी है क्या? Revelio. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students I had planned to get to that. Hufflepuff? A Ravenclaw? I know you might be a winning bet, and Ravenclaw would not have been. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. It encompasses the whole of the human condition. How's that? Well, all of the teamwork and flying about and the golden slip. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention to the next match, if there ever is one. I suppose you should. इधर ही आ रहे हैं। If I catch a student like a weed in a flower bed, I fear you are out of place. भाई का टीचर अपने को ऑपोजिट उसमें जाना था लेकिन क्यों
चल भाई अब तो स्पीड रन करेंगे चलो Revelio. faculty called you about. God. सब तो मिल गया ना मैं उधर उसका ध्यान भी भटकाया फिर भी Expelliarmus. बच गए भाई इधर नहीं है कोई भी नाइस Revelio. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery.
You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Nice, 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 nice. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Revelio. Finally. चलो गाइस क्या है इधर भूल गया था मैं क्या था इधर छोड़ो बाद में देखते हैं गाइस 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 बाय सी यू टुमारो अगेन आज सैडली कोई भी नहीं आया था अपना स्ट्रीम देखने सो बाय गाइस रात को मे भी स्ट्रीम करते हैं या तो नहीं देखते हैं चलो बाय गाइस बाय सी यू अगेन टुमारो बाय बाय लेट मी जस्ट सेव दिस and I'll leave. Chalo, bye guys. Bye.